ओके। नमस्ते, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आज का हमारा विषय है कि क्यों दलित बहुजन आदिवासी महिलाएं और क्वेयर समुदाय के लोग इंडियन न्यूज़ रूम्स में हमें दिखाई नहीं देते हैं। आज हमारे साथ बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, सब लोग इतने स्टेलर हैं अपने काम के फील्ड्स में। आई एम सो हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू. So I'm just going to introduce all of you. We have Grace Banu with us. Grace Banu is a very famous, very esteemed anti-caste trans rights activist. She has a collective of her own called Trans Rights Now Collective, and she is doing some very important work right now with horizontal reservations. I'm so happy to have you here, Grace. Um, we also have Bhanupriya with us. Bhanupriya has her is the founder of Behen Box, which is doing some very path-breaking work on gender and policy and justice. And I'm so happy to have you as well, Bhanupriya. Thank you, We Sujit. have we have Kavita Bundelkhandi with us, and I think everyone knows Khabar Leheria. It is the first of its kind, and it's revolutionary, in fact. So, welcome here, Kavita ma'am. Thank you so much for coming. And we have Ankur with us. Ankur is a queer journalist, and he's doing some really important work with intersectionality amongst the queer community in international media. Welcome, Ankur. Thank you. So the topic before us today is why there is no representation of the queer community when we look at intersectionality of caste. And we have a lot of statistics that we know. Oxfam report के हिसाब से सिर्फ 5% दलित और आदिवासी रिपोर्टर्स हैं न्यूज रूम्स में, इंग्लिश डेलीज में, और 10% है जब हम हिंदी न्यूज़पेपर्स की तरफ जाते हैं, और इसमें भी इंटरसेक्शनैलिटीज का हमें पता नहीं है क्योंकि देयर इज नो डेटा अबाउट दैट. सो कविता मैम, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी. सबसे पहले, आपने एक ग्रास रूट्स मार्जिनलाइज्ड विमेन के साथ अपना खुद का न्यूज ऑर्गेनाइजेशन खुला, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन अभी तक देने के लिए तैयार भी नहीं है. वो इन इश्यूज को आइडेंटिफाई भी नहीं करना चाहते हैं. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके क्या विचार हैं इस रिप्रेजेंटेशन को लेके? थैंक यू सुचित्रा जी। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं बोलना चाहती हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को। आपका 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल मूक नायक को सफर करने में काफी हो सकता है कि चुनौतियां रही हूँ इस सफलता के लिए, और बहुत सारे संघर्ष भी रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। जहाँ तक मुझे बोलना है और शामिल करना है यहाँ पर कि मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि मैं आगे क्या करूंगी, क्योंकि गांव में हम जैसे लोग, गांव में हमारे मम्मी पापा किसान है, खेती किसानी काम करते, तो पढ़े लिखे भी नहीं है। और मैंने तो बचपन से पढ़ी भी नहीं, क्योंकि मेरे जमाने में लड़कियों को स्कूल भेजना, पढ़ाना लिखाना इतना जरूरी नहीं समझा जाता। तो ऐसा कोई तैयारी, सपना नहीं था कि आगे चल के पत्रकार बनेंगे, जॉब करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने बड़ी उम्र में पढ़ाई लिखाई सीखा महिला समाख्या के थ्रू, और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ कुछ रास्ता खुलने लगी, कुछ कुछ एनजीओ के साथ में काम किया। और महिला समाख्या के थ्रू महिला डाकिया नाम की एक पत्रिका छपा करती थी, और उसमें मैंने काफी काम किया था। मतलब इस तरह नहीं कि मैं पत्रकारिता के तहत काम की हूँ, लेकिन मैं उसमें जुड़ती थी, कहीं पे चित्र बनाना हो, ड्राइंग करना है, या उसको गांव तक ले जाना है, ऐसे काम किया था। जब महिला डाकिया बंद हो गया था, उसके बाद में गांव के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए, तो गांव के लोगों ने मांग किया कि गांव में कुछ भी नहीं है, खासकर ऐसे समुदाय के पास नहीं जो दलित है, आदिवासी हैं, जो बहुत ग्रामीण एरिया में, दूर दराज के एरिया में रहते हैं। तो हमें लगा कि गांव वालों के लिए कुछ तो चाहिए ताकि वो भी पढ़ लिख सकें। बहुत छोटे में मैं बताऊंगी आपको, बहुत लंबा इतिहास है 20 साल का। तो हमने चर्चा किया, बैठक की कि कुछ तो होना चाहिए। तब हमने खबर लहरिया का सपना देखा और खबर लहरिया की शुरुआत की। लेकिन जब हम सोच रहे थे कि अगर हम एक अखबार को छापेंगे तो उसमें कौन होगा पत्रकार, हम किसको आगे लाएंगे,
तो हमने सोचा कि महिलाएँ होंगी और ऐसी औरतें होंगी जो हाशिए पर रहने वाली हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो मुस्लिम हैं, जो ग्रामीण हैं, जिनको पत्रकारिता के क्षेत्र में जगह नहीं है, क्योंकि ये पत्रकारिता की दुनिया भी ऐसी है ना कि इसमें मर्द हैं, उच्च जाति के लोग हैं, शहरी लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं और उन्हीं का कब्जा है इन क्षेत्रों में। तो हमने महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में उतारा और आज भी हमारे हर जिले में आपको यूपी, एमपी और बिहार के ज़्यादातर जिलों में आपको औरतें मिलेंगी। तो जब हम औरतों को ढूँढ रहे थे जो दलित औरतें थी, तो हमें मिल ना रही थी क्योंकि इतना पढ़ी-लिखी औरतें नहीं थी आदिवासी समुदाय में, दलित समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में। तो हम इतना ढूँढ रहे थे तो मुश्किल से हमको कक्षा 5वीं तक की औरतें मिली। कुछ औरतें थी जो नवजात पर थी जिन्होंने महिला समाख्या में पढ़ाई की थी। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ा-लिखा होना भी ज़रूरी है। तो हमें लगा कि हमको तो पत्रकार चुनना ही है और चुनेंगे महिलाएँ क्योंकि हमारे उद्देश्य में है कि हम नारीवादी मीडिया को खड़ा करेंगे। तो जब हम गाँव-गाँव से जो कम पढ़ी-लिखी औरतें थी, जो 2 तक पढ़ी है, जो 5 तक पढ़ी है, जो ना साक्षर हमने सबको बुलाया, हमने उनका इंटरव्यू लिया और हमने जब उनके साथ में ट्रेनिंग किया और जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, जब हम गाँव के मुद्दों की बात कर रहे थे, तो महिलाएँ इतना अच्छे से उन मुद्दों को रख रही थीं, इस जज़्बे के साथ में बता रही थीं, जातिगत मुद्दे बता रही थीं, गाँव में विकास नहीं है, किस तरह से अत्याचार होते हैं, सब चीज़ के बारे में मैं दंग रह गई सुन के। मैंने कहा चाहिए क्या? ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है या मुद्दों की समझ होना, उनके बारे में बातचीत करना, उनको प्रस्तुत करना और हमने उन औरतों को पत्रकार बनाया। पत्रकारिता के साथ-साथ जब हमने उनके साथ में काम किया, उन्होंने पढ़ना भी सीखा, उन्होंने लिखना भी सीखा, उन्होंने अच्छे से बोलना भी सीखा और आज बड़े मंचों का संचालन कर रही हैं। मैं आपके सामने हूँ, मैंने भी इसी तरह से सीखा है। पहले मैंने खुद में ट्रेनिंग लिया, फिर मैंने औरतों को ट्रेनिंग दिया, महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। तो ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल था, पहली बात कि औरतों को ढूँढना, निकालना, लाना क्योंकि पत्रकारिता की दुनिया का जो डर बैठा हुआ है कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं जा सकते हो। जो एक औरत का काम है, वो घर का काम है, चारदीवारी में रहना या अगर आपको नौकरी भी करना है तो बंधे हुए दायरे हैं। आप टीचर हो सकते हो, आप एएनएम हो सकते हो, अ, आप आशा हो सकते हो, आप आंगनबाड़ी हो सकती हो कि छोटे बच्चों के साथ में या जहाँ पर ऐसे चारदीवारी के बीच में आप जा कर के बच्चों को पढ़ाएँगे, फिर आपका एक सीमित टाइम होगा, आप अपने घर चले जाओगे। ऐसी जगह नहीं दी गई है जहाँ पर आप सवाल उठा सकते हो, जहाँ पर आप किसी की आँखों में आँख डाल के बात कर सकते हो, जहाँ पर आप अकेले जा सकते हो, तो दोनों तरह का दायरा क्योंकि यहाँ पर हम आज जातिगत भी बात कर रहे हैं और एक औरत होना, दोनों की बात। तो पहली बात है कि अभी भी बुंदेलखंड में या यूपी, एमपी में मैं बहुत कम ऐसे हैं जो दलित औरतों को देखती हूँ कि पत्रकार। मुझे लगता है यूपी, एमपी, बिहार के अलावा अगर मैं बड़े ही स्तर में देखूँ, मैं दिल्ली की मीडिया में देखूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पर भी कितने हैं दलित जो नेतृत्व में बैठे हैं, जो बड़े पदों में बैठे हैं, नहीं है जगह उनको, ये जगह नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि मूक नायक है, खबर लहरिया है, जिस तरह की आवाज़ों को हम लाना चाहते हैं, हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो हाँ, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है और एक दलित होने के नाते काफ़ी धमकियाँ भी मिली, काफ़ी लोगों ने आवाज़ों को चुप कराने की कोशिश की है। जब किसी उच्च जाति के गाँव में गए हैं, उनके मुद्दों को हमने उठाया है, तो उनको लगा हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू, फलाने की बिटिया ऐसे कैसे कर सकती है? वो हमारे खिलाफ में कैसे लिख सकती है? हमारे इलाके का जो इतना बड़ा अखबार है दैनिक जागरण, उसने तो मुँह नहीं खोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तो हमने फिर हिम्मत तो दिखा दी है भैया कि अगर खबर छपेगी तो छपेगी। फिर बाद में चाहे जो कुछ हो जाए, खबर छपी, खबर वितरण हुई, अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, जाँच हुआ, खबर का असर हुआ, सब कुछ हुआ। फिर लोगों को लगा जब 1 बार, 2 बार
तो ऐसे-ऐसे धमकियाँ तो बहुत मिली हैं, जाति होने के नाते, महिला होने के नाते, ग्रामीण होने के नाते, घर की बहू-बेटी होने के नाते। लेकिन हाँ, अड़े रहे हैं, पीछे नहीं हटे हैं और हाँ, हर एक दलित लड़की, हर एक मुस्लिम लड़की, हर एक आदिवासी लड़की जो आज खबर लहर में पत्रकार है, सबके अपने अलग-अलग संघर्ष रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को दबाव नहीं मिला है, किसी को धमकी नहीं मिली है, लेकिन हमने ये ठाना है कि कितने भी दबाव आए, धमकियाँ, लेकिन न्यूज़ चैनल नहीं बंद होगा, अखबार नहीं बंद होगा। तो ख़ैर अब तो हम डिजिटल हो गए हैं, तो अब तो पूरी दुनिया में लोग जानने लगे हैं, लेकिन शुरुआत में इतना मुश्किल हो रहा था, जब अखबार बेचने जाते थे, तो ज़्यादातर हर जगह लोग जाति पूछते थे। क्या नाम है? कविता तो आगे क्या लगाती हूँ? कविता लगाती हूँ। नहीं, नहीं, आगे क्या लगाती? अरे भैया कविता हूँ, आगे क्या लगाती हूँ? जाति से इतना लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। अभी मैंने 2 साल पहले मैंने अपने नाम के सामने बुंदेलखंडी लगाया। मुझे लगे मैं कि किसको महत्व दूँ? अपने ससुराल वालों को महत्व दूँ कि अपने मायके वालों को महत्व दूँ? मैं किसी का सरनेम नहीं लगाना चाहती। तो अभी मैं गई थी हॉस्पिटल 2 साल पहले और वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर ने पूछा, "कविता बुंदेलखंडी कौन-सी जात होती है?" हमने कहा, "बुंदेलखंडी कौन-सी जाति होती है? ये कैसा सवाल है?" हुँ, बोले, "नहीं, हमने मिश्रा सुना, पांडे सुना, वर्मा सुना, ये क्या होता है बुंदेलखंडी?" हमने कहा, "समझिए कि हमने एक नई जाति की उत्पत्ति की है, ये भी एक जाति ही है, हमारे इलाके का नाम बुंदेलखंड है और हम बुंदेलखंडी हैं, बस इसके आगे क्या है?" तो जगह है, देना नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन जगह हमको लेना है, ये मैंने ठाना है। तो आपके लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी क्षमता है औरतों में, लड़कियों में, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर जो एक तरह का चोर तो नहीं कहूँगी, पर वो डर अभी भी है, वो छुपा है। तो भैया उस डर को निकालना है, आगे आना है। जितनी सारी कविता बुंदेलखंडी बन सकती हैं, आकर के वो जी, बहुत ना बोल जाऊँ, वैसे सब लोग हैं और मेरे पास समय कम है, तो मैं बीच में चली भी जाऊँगी, तो मैं सबको अभी सुनना चाहती हूँ। जी, आपने मतलब बिल्कुल कि सही लोगों कहा। ने कुछ भी डाला, आप काम करो तो कई पता लगे क्या चीज़ बोले, क्या चीज़ ना बोले, क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसको यहाँ रखें, क्या चीज़ कम, तो ये वाली चीज़ें भी हैं। जी। जी, आप सभी चीज़ें बोलिए हमें ये सारी चीज़ें सुननी है। जी। So, I would like to ask Grace ma'am now, from your experience of activism and like from your as a news consumer and as an activist, how do you see this lack of representation in news, and how does it affect what happens on the ground and how movements work because of the lack of representation in media? Thank you, Suchitra, and congratulations to the Mutnaik, and because you created a safe space for the DBA community people, and yes, uh, because why I'm saying safe space. So when we talk about the DBA community, queer and trans people, and DBA community women, specifically women, so we don't have a safe space in the mainstream spaces, the larger level movements, the larger level spaces. So the safe space means here it's an opportunity. So even all the people, the DBA community people are having all kind of talent, and here nobody doesn't see about the talent. So they want to know about our histories and what is our caste background. So wherever we go, caste is in front of us. So after that only they will decide, okay, where we will go put these people. So here, the media, when we talk about the media platform, it's a casteist platform, and Islamophobia, homophobia, and all the people are mixed in that platform. So in that, within the media,
all the people are facing caste discrimination, gender discrimination, and it's all occupied by the patriarchy people, like specifically the cis patriarchy people and the Brahminical patriarchy people. So they're all ruling all the spaces, and they're all occupy all the spaces. And we should, you know, go to the labor under their platform. So it's in that we don't have a safe space. Safe space means we don't have a protection from those kind of people. Because when we face any kind of discrimination, when we face any kind of atrocity, and they're not, stand behind us, always they will take back the step, and they're always keeping silence. Hmm. So their silence is more apartheid for us because and they knew everything. In the sense, they don't know. There are so many people when we ask the upper caste people, the Savarna people, why you are keeping silence for this incident, and they are saying, and they are saying, no, we don't know, and we don't aware. It's not at all. They know very well. They know, they're aware very well, but they're not ready to take a step. They're not ready to give the solidarity for us. So that is casteist thought. That is casteism. So we are all fight against to break those kind of thoughts. And those thoughts of being a queer, the cisgender, caste, privileged people, they are having so much of, you know, they're all oppressor. They are oppressing us. So it's super difficult to fight with this kind of casteist people. Yes. But every day we are fighting, and that's why we are creating a safe space within our own space. And like Mook Nayak and so many media platforms, it's a very few media platforms is there, and the queer friendly and trans friendly, and it's very few. And specifically, DBA community, trans and queer community people, we don't have any space, any privileged space, any platform. We have our representative people very, very few within 10 numbers. That's it. So here, we don't have a safe space and we don't have a privilege, but all the gender dominant people are using all kind of platform. But whatever, and when we go to when we talk about the media and journalism, so journalism also privilege course for us. The people, we don't have money, the financially, and the educationally, and we are still struggling to get education. We are still fighting for to get education. Yes. So it's a super privilege for us, but the very few trans people representative in the media is there, but they're all upper caste Savarna people, and they're all in the superior posting. And even though when a queer or DBA community queer people write an article and will move to the editor, and definitely the editor rejected our article, and they don't have a space, and they will not, they're not ready to give the space for us, and they're not ready to, oh, this topic is going on, so we don't want. So we will take, we will put this later, and those kind of answer, and the ignoring, the ignoration. So the ignoring it's happened, but that is also one of the apartheid for us. Yes. So here, wherever we go, we are facing casteism and so we are facing discrimination in the name of caste and gender.
Yes. Thank you so much. Uh, yes, that is very important because there is a triple layer of operations, so it's very difficult to get those spaces and build safe spaces, like you said. Moving on, I would like to ask Bhanupriya ma'am, when you started this organization, आपने gender और intersectionality से mindful होके इस organization को start किया. But mainstream media or even alternative media, the newer liberal media that is beginning, is not ready to have these conversations yet about adequate representation. So, what is your view about that? Yeah, thank you, Sujitra. And first of all, congrats to the Muknaik team. सारे टीम को बधाई, बहुत बहुत बधाई, एक साल बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए. और ये जैसे ग्रेस और कविता जी भी बता रहे थे कि ऐसा प्लेटफॉर्म, खुद का प्लेटफॉर्म होना और कितना जरूरी है. और क्योंकि इंटरनेट हैज वो बैरियर टू एंट्री भी रिड्यूस कर देता है, तो हैविंग दैट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत, आई थिंक, एक तो इम्पोर्टेंट है. और एक तो ये भी कि इन मॉडर्न टाइम्स it becomes so, it is easier than starting a legacy media or whatever. So to your question, Suchitra, जब हमने बहन बॉक्स शुरू किया था तो इस सोच से शुरू किया था कि जब हम कोई भी जेंडर रिलेटेड इश्यूज के बारे में देखते थे न्यूज में, या even with, like you said, with the alternate media as well, तो ये कि काफी इवेंट बेस्ड होता था, कि यहाँ ऐसा हो गया या कुछ और इवेंट हो गया, like as if gender issues just were sort of events, right? और हमें लगा कि हर चीज इतना जेंडर्ड है. कोई भी पॉलिसी होती है, आप फार्म लॉज को ले लीजिए या कोई भी जो आपको लगेगा कि वो काफी न्यूट्रल है, बट इट इज नॉट, क्योंकि वो डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट मार्जिनलाइजेशन को अलग तरीके से इफेक्ट करता है. तो ये हमें कमी दिखी कि वैसा एनालिसिस, वैसा पॉलिसी एनालिसिस, वैसा स्ट्रक्चरल एनालिसिस थोड़ा मिसिंग था मीडिया में. और ये कॉन्वर्सेशंस, हमें लगा कि एक पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हर चीज को जेंडर्ड तरीके से देखे, उसके जेंडर्ड इम्पैक्ट को देखे और उसमें भी इंटरसेक्शनल लेंस से देखे. तो ये हमारी कोशिश है कि हम उन कॉन्वर्सेशंस को सामने लाएं कि हर चीज, हर पॉलिसी को कैसे जेंडर्ड और कैसे इफेक्ट करता है, एंड बाय. और दूसरा ये कि जेंडर का जो जस्ट डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बदलना जरूरी था, क्योंकि इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ मेल फीमेल बाइनरी का अंडरस्टैंडिंग है. और वो हम काफी हद तक बदलना चाहते थे, नॉट काफी हद तक बट पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं अपने मीडियम के द्वारा. तो जब हमने ये शुरू किया था, फॉर एग्जाम्पल, हमें लगा कि जो नालसा जजमेंट है, तो नालसा जजमेंट में इतने सारे जो भी प्रोविजंस अभी तक हैं, उनका जो ऑडिट है कि कैसे वो प्रोविजंस, वो रिजर्वेशंस हो या ट्रांस एफर्मेटिव हेल्थ केयर हो, तो ये सारे डिफरेंट स्टेट्स कैसे इसको लागू कर रहे हैं, राइट? तो ये सारी तो हमारा वो है कि हाउ वी लुक एट. एंड ऑल्सो लाइक जैसे इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में ये महिलाओं के इश्यूज, ट्रांस इश्यूज, ये why are they not center stage, right? Why are we not talking about this? Why are we not holding our governments to account? For example, we are in in the upcoming Punjab elections, we are doing a series of stories around why what are the why is there no gender affirmative health care for trans persons in Punjab?
why is there not even a policy for it, right? Why do trans people have to go to private healthcare when it is mandated that government should provide that healthcare in government hospitals? तो हमारी कोशिश तो यही है in terms of alternate मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर साइलेंट बहुत हद तक है, जैसे ग्रेस ने बताया और कविता जी ने भी अपने एक्सपीरियंसेस से बताया, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया में अभी अभी कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है और यही है कि हमें जितना ये गैप्स दिखता है उस गैप्स को हमें फिल करने की जरूरत है। और एंड आई फील जैसे ये फिल करना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या उससे होगा नहीं, इसीलिए हमें अलायंस बिल्डिंग की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम से मूकनायक के साथ जैसे हमारा मॉडल ये है कि हम काफी लोकल कलेक्टिव्स, विमेन्स कलेक्टिव्स के साथ काम करते हैं ताकि उनकी जो रिपोर्टिंग हो वो हम अपने प्लेटफॉर्म में वो कर सके। सो इन अ वे वी आर सो द रिपोर्टिंग इज डन बाय देम एंड वी आर गिविंग आवर प्लेटफॉर्म इज sort of hosting those conversations and that kind of reportage. So इस type का alliance building भी जरूरी है ताकि that representation happens and we're able to sort of fill those gaps that are there in even the alternate media. But I do feel that the conversation is sort of progressing. It is kind of changing. Albeit I would think it should happen a little faster, a little more, क्योंकि हमें लगता है, and this is what we see, that you occupy a particular space and immediately you'll see there is one step forward and there are two steps backwards. So every time you have to keep fighting new battles. Like for example, very recently, just 2 days ago, we saw that SBI, State Bank of India, ने ये कहा कि 3 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी होने वाली महिलाओं को रिक्रूटमेंट के लिए वो फिट नहीं है. Okay, and this is 2022 and we are kind of having to fight that battle all over again. So the point I'm trying to make is that every day there are women's rights, gender rights are being sort of, there are ways in which this shrinking is happening. So I think what we need to really build is alliances so that we are able to amplify and take these matters as swiftly and as effectively as we can on all our mediums. Yes. Yes, that's true. We do need to speed it up. It's overdue, but now we really need to speed these things up. Coming to Ankur, so you've been reporting caste intersectionalities within the science and tech sector, which I find very interesting. What are your views on this, complete lack of representation? Like the queer community is also not represented well, and even then there's a select few from a certain community or from like an elite place of privilege. What do you think about this? Yeah. First, thanks for inviting me for this conversation. And congratulations to Moonayak for completing 1 year. And I agree with everything that has been said here by Kavita ji, Bhanupriya Jagola, and by Grace. So I don't have like much to add because everybody has said almost everything. But I'd just like to add कि अंडर रिप्रेजेंटेशन मीडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है और वो बड़ी प्रॉब्लम नॉन एक्सेप्ट करने की क्वियर समुदाय को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि सोसाइटी में नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो मीडिया भी सोसाइटी का ही भाग है तो उसमें भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इसीलिए और एक्सेप्टेंस कई बार कई जगहों पे बड़ा एक हॉस्टिलिटी सी होती है जो वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से क्वियर समुदाय को डिस्कार्ड किया जाता है. पीपल डोंट रियली टॉक about these issues, which in itself is exclusion. You know, I'll give you just my example to make this thing simpler. Is that I come from a small town in UP. मैं अलीगढ़ से हूँ. अलीगढ़ से जब दिल्ली आया तो मुझे लगा कि दिल्ली में तो अब मैं खुल के अपने बारे में बात कर पाऊंगा. हाँ, और मैं एक बड़ी प्रोग्रेसिव मैगजीन में काम कर रहा था.
उस मैगजीन में मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे तो बड़ी एनवायरनमेंट की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे तो अच्छे से मैं अपने बारे में बात कर पाऊंगा, लेकिन वहाँ कोई भी what does it mean to be gay or lesbian or queer, what are the issues of the community, कोई बात ही नहीं करता था. So I started feeling that maybe it's not a safe space. Even progressive spaces don't feel safe. That's the case. And then now you go to media houses which are, say, for example, in Aligarh. अब अलीगढ़ में अमर उजाला हो या दैनिक जागरण हो, वहां तो मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं बोल पाऊंगा इस बारे में. तो ये एक बड़ी समस्या डिग्निटी की है कि हम समुदाय को देखते ही कैसे. जब तक वो चेंज नहीं होगा, मीडिया में भी कुछ नहीं. और ये एक सर्किल की तरह है कि पहले मीडिया को शुरुआत करनी पड़ेगी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया में एडिटर्स जो हैं उनकी है. They will have to very actively say that we want queer children, and we very actively say that we want Dalit queer children. Very actively say that we want Adivasi queer journalists. You can't just say that we want queer people. You have to be very intentional. काफी इंटेंशनल होके आपको बोलना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए क्योंकि वो इश्यूज इम्पोर्टेंट हैं और उनके व्यू पॉइंट और जो जैसे क्वेयर लोग सोचते हैं उनका नजरिया इम्पोर्टेंट है. वो जो स्टोरीज में ऐड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो आपको आगे आना होगा, कहना होगा कि हमें आपकी जरूरत है. और यही प्रॉब्लम है कि जो कोई कर नहीं रहा. Nobody is coming forward to say these things, and when nobody says these things, we don't feel safe in coming forward. And because of that, we need to now make our own spaces. It's the same thing when you don't give seat on your table, we'll have to create our own table. You know, it's the old saying, you know, which is what now I'm trying to do by building Queerbeat. मुझे नहीं लगा कभी भी कहीं जाके कि मैं कह सकता हूँ, बल्कि मैं तो एक डोमिनेंट कास्ट से हूँ. Now you imagine people who are not, who are Dalit or Adivasi, you know, maybe you can't say, you know. So it's very important for editors and for media houses to say it very actively, hire very actively, give them big positions. Like Bhanupriya ji बोल रही थी कि इवेंट ओरिएंटेड स्टोरी होता है जेंडर के बारे में. मुझे हमेशा से बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई हर जून में हमारे बारे में स्टोरी लग जाती है कि क्योंकि प्राइड मंथ है. पूरे साल कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जून में सारे लोग बात करने लग जाएंगे, सारे मीडिया हाउसेस बात करने लग जाएंगे, सारे पेज 3 जर्नलिस्ट लिखने लग जाएंगे, सारे बैंक वो करने लग जाएंगे. सबको याद आ जाती है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को याद आ जाती है, सबका बैनर बदल जाता है, सबका बैनर रेनबो हो जाता है जून में. So it's very problematic. It's like you are just looking at, you are cashing in our identity. हमारी आइडेंटिटी का फायदा उठा के अपनी रोटी सेक रहे हैं, इन शॉर्ट, यू नो. तो ये तभी बदलेगा और ये इवेंट ओरिएंटेड रिपोर्टिंग तभी बदलेगी जब हम होंगे न्यूज़ में. तब हम कह पाएंगे यार ये ठीक है, प्राइड मार्च की 2 स्टोरी ठीक है, बट जुलाई में भी बात होगी, अगस्त में भी बात होगी, सितंबर में भी बात होगी, और ये कहानियां होंगी. और ये कहानियां इस बारे में नहीं होंगी कि इस स्कूल में ये वाली बात हो रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन क्वेयर रिप्रेजेंटेशन कर रही है. There are so many issues of the community that people do not even know, that we need to talk about, and they cannot know. They cannot know because they are not us. So we will have to, if they are not giving us the platform, we'll have to create our platform, which is what Mook Nayak is doing. And which is why I celebrate spaces like जो कविता जी कर रही हैं, जो भानुप्रिया जी कर रही हैं, जो ग्रेस कर रही हैं,
और हम लोग जो मिलके कर रहे हैं यहाँ पे, जो मूक नायक कर रहा है, we will have to do these things. There is a sense of solidarity and empowerment in our existence. You know, that is what we need to do. मुझे लगता है कि queer एक beat ही होनी चाहिए. This is not an existing beat in newsrooms. It needs to be a beat. It's big. It connects with everything. Wherever you go, you look at health, you look at environment, you look at work, you look at labor. Everywhere, we are everywhere, and we can't come forward in the newsroom because you're not giving us a safe space. The point that Chris was consistently making. You have to say very clearly to people in your newsroom that we are safe. आप कई बार आपके कहने से नहीं होगा, आपको 10 स्टोरी करनी पड़ेगी पहले हमारे बारे में, तब हमको लगेगा कि अच्छा यहाँ पे स्टोरी होती है, यहाँ पे हमारे बारे में सोचा जा रहा है. तो शायद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि सर एक्चुअली मैं भी समुदाय से ही हूँ, मैं बताना चाहता हूँ. तो ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब चेंज होगा. मुझे ऐसा नहीं है कि हम लोग मीडिया हाउसेस में नहीं हैं. Queer people are there in media houses, but they can't say that I am queer, I am in your office, I can do good to you. They can't say it. So you have to create that space that we can come forward and help you. You are not even letting us help you. So that, in short, I wanted to say. And again, the point about intersectionality, it is huge. I, as a dominant caste gay man, I have no idea what it means to be a gay Dalit, what it means to be an Adivasi trans person. I have no idea. So if I want to build Queer Week, I need them to talk about their stories. And ये हमको छोड़ना पड़ेगा. This arrogance we'll have to leave as leaders of newsrooms that we know. We don't. We have no idea. You have to lift people up and give them the front space. You need to be at the back because you don't know. You have to lead with the sense of acceptance and clarity and humility that you do not know. Stop the facade that you know. Or you can know, you can't even know. You don't have the capacity because you are not queer, you're not gay, you have not lived like that, you have not lived like a trans person. Right. That's all. Yeah. Am I audible, Suchitra? Yes. Yeah. So basically, what we have discussed till now, that the lack of representation in media houses, and I want to attract all of our attention to the its affect it's after effect of that lack of interest representation. So if we see the kind of news that make in the mainstream media regarding the scheduled caste, scheduled tribe, and the queer community, if we see those news, what we see is the news of scheduled caste and scheduled tribe and the queer community, when it makes to the front page, when it makes to the headline, it makes headline when something very heinous crimes happen, when something caste crimes happen, atrocities happens. Then we see the main media talking about the issues of scheduled caste, scheduled tribe, to that limited incidents, to that limited crime, and it runs for several days, and then wash out something. Then there is blank. Nothing comes out of that. But I just want to say, because of there is no lack of interest, what is it doing is it is not reflecting the lives, the culture, and the assertion of the SCs, STs, queer community,
We don't see that. We don't see something their political issues of the scheduled caste, scheduled type, the political issues of the queer community. We don't see the culture of a queer community. We don't see the queer culture of lives and culture and success stories of the community members. All those important issues are missing in the mainstream media, and that makes the Indian population the highest number in population, as we say, the Bahujan. Who are the Bahujan? The scheduled caste, scheduled tribe, the OBCs, the queer community, the Muslims. All these constitute a majority of the Indian population. Yet what we do is we exclude them, we isolate them, and we don't share, we don't show, we don't celebrate those lives, we don't celebrate their struggles, their achievements. What we do is only our attention only shifts to the community only when something heinous or something crime happens. And I just want to say enough of that is also important, right? That is the media attention for those crimes and those incidences are important, but that's not the end. That's not at all that's not the only thing that is their issues. There are several issues, and those issues we don't see that is reflected in our न्यूज. हमें 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 हमारे न्यूज मीडिया को तभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का ध्यान आता है जब कोई बहुत ही हेनियस क्राइम, जब कास्ट अट्रोसिटी होती है, जब कोई घटना होती है जो अमानवीय है, तब हम वो शेड्यूल कास्ट के बारे में दिखाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया. और बाकी जो चीजें हैं, उनकी जो सफलताएं हैं, उनके जो पॉलिटिकल इश्यूज है, उनकी जो मांगे हैं, वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में बनती नहीं. उनके कल्चर्स कभी सेलिब्रेट नहीं होते, उनके सक्सेस कभी दिखाए नहीं जाते, कभी शेयर नहीं किया जाते, सेलिब्रेट नहीं किया जाता, जबकि वो तबका इंडिया का बहुजन है, ज्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये सब ये कर रहे हैं. तो आई जस्ट मुझे ये डिस्कशन उस तरफ ले जाना कि इसका अफेक्ट क्या क्या हो रहा है हमारे एज ए सोसाइटी पर फॉर नॉट हैविंग द रिप्रेजेंटेशन. तो आप में से कोई उसे शेयर करना चाहे, इस बात को आगे बढ़ाना चाहे, तो आई वुड लाइक टू we would like to listen. Anyone. Bhanupriya madam can speak. जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि यू नो जब कोई हीनियस क्राइम होता है या इवेंट होता है, तभी इसकी कम्युनिटीज की बात होती है. एंड दिस इज, जैसे मैं पहले बता रही थी, ये एक सबसे बड़ा गैप मुझे दिखा था जब हम और जिसकी वजह से शायद हमने बहन बॉक्स शुरू किया था कि हमें मूव आउट करना है, क्योंकि द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, like you said, the event is happening, पर ये इवेंट होने का कारण क्या है, क्यों होते हैं ऐसे इवेंट्स, राइट? क्यों मतलब क्यों why is there so much violence against people from these communities? So unless we understand the structural causes for it, and the biggest structural cause is the lack of representation, whether it's in policy, whether it's in politics. आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए कितने ट्रांस, क्वेयर और अभी भी ये होता है कि जो रिजर्व्ड सीट्स होते हैं, उसी में से उम्मीदवारों को उन कम्युनिटी से खड़ा किया जाता है, राइट? हम अभी यूपी इलेक्शंस और पंजाब इलेक्शंस का वो कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, और मैं बहुत सालों से पंचायत इलेक्शंस के बारे में भी देख रही हूँ और लिख रही हूँ. तो
हर जगह ये देखने को मिलता है कि जो रिजर्व्ड सीट होती है महिला की, या महिला शेड्यूल कास्ट या महिला शेड्यूल ट्राइब्स के जो रिजर्व सीट्स होते हैं, वहीं से महिलाओं को खड़ा किया जाता है। तो ऐसा है कि जनरल सीट्स जो है वो मर्दों के लिए सिस मर्दों के लिए रिजर्व्ड है, और बाकी जो रिजर्व सीट्स है उसमें से इनको खड़ा करना चाहिए। तो पहले जब आप पॉलिटिक्स से ही एक्सक्लूड कर देंगे और उतना ही रिप्रेजेंटेशन देंगे, राइट? सो यस, रिजर्वेशन इज सो इम्पोर्टेंट, पर रिजर्वेशन के आगे जो एफर्मेटिव एक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी चाहिए अपने स्ट्रक्चर्स में, अपने अपने उसमें, तो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने में, जब तक ये नहीं होगा तो रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही रहेगा, राइट, जितना ग्रांट किया जाता है। और ये रिप्रेजेंटेशन हम लोकल लेवल पे देखते हैं, जहां तक स्टेट और नेशनल लेवल पे होता है वो रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाता है, राइट? देयर इज हार्डली एनी प्रोविजन फॉर दैट रिप्रेजेंटेशन। तो जब तक आप पॉलिटिक्स में उनको नहीं इन्वॉल्व, पॉलिसी में एक्सक्लूडेड रहेंगे, और एंड द मीडिया ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक ये इश्यूज में से ये स्ट्रक्चर से एक्सक्लूड रहेंगे, जैसे अंकुर और ग्रेस और कविता जी बता रहे थे कि जो लोगों को स्टेप बैक करना है अभी, राइट, इवन फॉर पीपल लाइक मी, हमें स्टेप बैक करना है। अगर हम वी वांट टू टॉक अबाउट इश्यूज ऑफ ट्रांस रिप्रेजेंटेशन और ट्रांस इश्यूज और क्वेयर इश्यूज, हमें स्टेप बैक करके वी नीड टू लेट पीपल फ्रॉम दीज कम्युनिटीज टू काइंड ऑफ कम फॉरवर्ड एंड टेक दैट, वी नीड टू लिसन टू देम, राइट? जब तक वो नहीं होगा, और जब तक एज एडिटर्स और एज we don't say that these issues are important, and not just the issue, right? It's the lens of looking at it, or at the issue. तो issue को तो हमने represent कर दिया, हमने थोड़ा 500 words का space दे दिया, but हमें उसके बियॉन्ड जाना है, हमें देखना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, स्ट्रक्चरली क्या प्रॉब्लम्स है, पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम्स है, और ये सब हमें देखने में कौन दिखा सकता है? पीपल फ्रॉम दोज कम्युनिटीज, राइट? आई कैन नॉट बी सिटिंग एंड writing about these things without, so that apart from the representation, the perspectives, the importance that these lenses bring is so vital for us to understand. And once we understand and we put it forward, that is when I think at some point policymakers, at the end of the day, we want the policy to change and work for different communities. That is the kind of equality that we imagine and we're looking at. तो जब तक वो नहीं होगा, ये वाले प्रोसेस से नहीं शुरू होगा, तो वो वाले प्रोसेस तक हम कभी जा भी नहीं पाएंगे। फिर एवरीथिंग बिकम्स वेरी टोकनिस्टिक। तो वो हमें टोकनिज्म से ऊपर उठना है, और वो we need to look at, and that's why representation is not just a term, it is a reality. It should be a reality, it should be a process, right? It should be, you have, as I think Ankur was saying, कि आपको एकदम एक ये नहीं बोलना है कि we encourage Dalit, Bahujan, Adivasi, queer people to apply. No, you don't encourage them. You say we have reserved this position, this reporter position is only for people of these communities, right? Until we do that, we are only like, we are doing lip service. So उसका जो आप पूछ रहे थे आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स यही है कि जो इश्यूज लोग सालों से देखते आ रहे हैं वही तो प्रेजेंट होता है, एंड देयर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ ऑपरेशन, राइट? जैसे आपको यार ट्रांस पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और ये सारी चीजें अभी हम क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, there's so much we don't know about, हमें कोई आइडिया नहीं है, राइट? और जब तक ये इश्यूज को आप लोग लीड नहीं लेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, and that onus should not be upon these communities. That onus should be upon people like us who faces, and then of course big media houses. But I can't speak about big media houses. I'll speak about the more alternative ones. It is imperative upon platforms like us to create those spaces and show the kind of the way forward. And this is where I feel that alliance building is so important. तो हम बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, शायद हम पूरा काम एक अपनी तरफ से नहीं कर पाए, क्योंकि मैं ग्रीडी हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये इश्यू भी लिखना चाहिए, बट हो नहीं पाता है because of the resources and all we have. And this is where I think that alliance building and that learning from each other should happen.
Right. Yes, madam. Yes, madam. I want to ask Grace, madam, right now. Uh, I have experienced that I write. I sometimes write, and I send it to the media houses to get it published. I have experienced that sometimes when I write about the social issues with anti-caste Ambedkarite perspective, my experiences is that the media houses uh, uh, tries to somehow tone it down, the article or the argument I'm trying to making. They tries to somehow tone it down, dilute it, or they will just say, "Oh, can you put it in this way? Can you bring your line of thoughts to much more general, wider, normal way rather than being very sharp and uh, to the point." So I have and I have been also shown suggestions like, oh, you don't know how to write that, let me show you some pieces that works, let me show you some pieces that makes more of a audience. So that kind of feedback I get from the media houses, which are not essentially from the community, and exactly the kind of we were discussing that we don't get the space even if we try. So I would like to ask Grace, ma'am, their experiences, and I would also like to bring the topic of horizontal reservation. Yes. What kind of a response did you expect, and what kind of response did you see in the media houses that was the topic was covered, and how did you felt about all that? Please, ma'am. Okay, great. Thank you, Prashant. Thank you for asking this question. Yes, as you said, the casteist people, and they are allies for us, and they didn't know what is allyship and what are the allies' roles and responsibilities. Right. A and B, and they're all casteist people, and they have the power. They are in the Right. power structure, Right. and they are ruling us. So, and it's not it's a media platform. So we don't need to impose our thoughts to another person. Right. So if we write an article or any anything, so we are this is not a one example. Wherever we go, and Right. it should be a media, it should be a political, it should be a whatever the platform. Wherever we go, going to use the mainstream platform, mainstream space, all the mainstream spaces who are, as I said, occupied by these Savarna people and the castes people, those people are beginning like, they don't say openly, okay, we don't want this kind of topic. But they will say, okay, oh, you should change, like, this kind of modification. That Yeah. modification means, Yeah. they need to impose their thoughts to us, Right. and they need sympathy from us. They don't want to need our rights. When we raise our rights, when we talk about our rights, they're not ready to listen. So when we create a sympathy, when we create a sympathetic story, and they're like, oh wow, this is amazing, this is awesome, so we should publish. So those kind of casteist, privileged casteist thoughts, so they are having, and we don't need to change their mindset because we are super tired. Right. We are super Right. tired to fight Tired. with Right. this stupid kind of people. Sorry to say that. Yes, they are stupid because they knew Right. everything, but they are behaving like, oh, I don't know. No, I don't know. And most of the time, as I said, when
atrocities, the violence is happening against the DBA community, queer and trans people, or the DBA community women. Most of the time, they are keeping silence. So silence is the solidarity for us. So we should take those kind of silence and those kind of solidarity from those kind of allies. And the Harisana reservation. So when we started in India, very few trans person from the DBA community, and I think with the reservation topic, and Right. especially trans persons reservation topic, Right. me and Livingston Vidya only raised that issues and raised that demand. And now Livingston Right. Vidya is not here. She's in the out of country, and she's a refugee from. So she's in the out of country. And I'm the only person there. But I'm doing advocating, the getting a reservation, the reservation policy. So more than 15 years, and I got so many negative response from the community, from our own community, Right. and within our own community. I got so many threats. Life threat, it should be violence, physical violence, whatever. So when we ask the demand, or we need to get education, our community need education, employment opportunity, and this is our right. So when I raise this question, so many threats I got from my community, because all other cis dominant community people, they push, they utilize the trans community to stand against me. But now after 15 years, now those casteist kind of people are, they are ready to erasing our history line always. They're not, they're not supporting to write a history, write our histories, but they're quickly ready to erase our histories. So those kind of, those people coming forward to file a PIL in the various kind of high courts. We need reservation rights, separate reservation rights, those kind of things. Now because they want to climb those opportunity, yes, always we are the savior of your community. Right. They need to create those kind of things. But no, we are here to save our community people. You are an ally. You should behave like an ally. You are not our leader. We have our own leaders. We are creating our own leaders. We are creating within our own safe space. So this is also one of the casteist kind of thoughts. So the Horizon Reservation campaign, we started, for example, when 377 judgment came, all across the globe celebrating those judgments. And when we compare with the NALSA versus Union of India 2014 judgment came, very less. It's not a compare with the 377 and NALSA judgment. So it's a very few, very less people are celebrating, and they are doing advocating, blah 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 blah. Those kind of celebrations happen. And when we talk about the Alexander reservation, nobody coming forward to talk about this issues. That is casteist thoughts. So here we are so ignorant, and some Hindutva casteist activists openly says, within our own community we don't follow religion, caste, blah blah blah. So this kind of attitude also the caste starts. So obviously she's a casteist, trans activist. So this kind of people, surrounding us, and this kind of people are having the power structure. Yes, for example, the National Council for the Trans, and this all occupied by the Savarna people, and Savarna trans. Nobody, Dalit representative people are there. DBA community trans not is there. They're not. Where are our representatives? So why we are asking this? That is power.
You people Right. are having power. You people are Yes. using the power. You people are creating the histories. You people are narrating the histories because of you are having the power. So we need those kind of power for us because our people, we need to narrate our own histories. We need to write our own histories. We need to create our own space. Right. So that's the thing. So here, power is the problem. Who are having the power and who are having now the powerless people. So we are fighting to get the power. So Right. the Right. horizontal reservation, obviously, the DBA community people only we will talking about. Oh, when we talk about the reservation, it's a the DBA community people Right. topic. But when the same reservation is going to be 10%, so they will take, EWS. oh yeah, this is our rights. We need our rights. So that time they will Yeah. show their rights and solidarity. But Right. when the same questions, the same demand, when we rise, they are keeping silence. So they Yeah. are Yeah. giving Yeah. silent solidarity. Right. So how the caste is chaos and the caste role is happened here, and how the caste people are using their power to narrate Yeah. the histories, to create a now space. So about we are so many so media people are writing about the horizontal reservation, but nobody didn't take an interview. Right. Take my interview. Right. They Right. are thinking, oh, horizontal reservation. They are picking some upper caste people Yeah. statements and Yeah. they will write a Yeah. article. Right. So this is those people mentality. And when we start when we talk about the media people should know, how to pronounce the trans people, how to pronounce the Right. queer community people, and that is also it's a abuse. Excuse Right. me, I want to tell one thing. Do you know what is verbal abuse? So you are misgendering. I know Yeah. when you misgendering the trans and queer community people, that is verbal abuse, and it's abuse, Right. and they don't know. They knew very well, but that is their kind of thought. Those people thoughts, the misgendering the queer community people, and they should know what is ally, and they should know. Their histories, the queer community histories, and they should know the gay community histories. And before that, they should read, go and read what is ally, what is Right. allyship, what is your roles and responsibility. Right. Behave like an ally. You are not a leader. Right. Right. Yeah, that explains, ma'am. You have explained very Yes. well. Yeah, to be very honest, when you were campaigning for the horizontal reservation for transgender persons, we have seen very less opinion pieces, articles written in the mainstream media, what we call print and digital. We have seen very less support for the community, for the queer community, where in case even I will go further and I will say that even the queer community was not also fully supporting. It was a section, it was the intersection, those who belongs to scheduled caste, scheduled tribe, and those who were the queer community, they only because it makes sense that what is their So yeah, what so is the their community people, community people, community response, yeah. and the queer and trans DBA community people Right. response for your kindly information. Our Right. community people are doing begging and sex work, and Right. they don't have a time to what's going on the surrounding us, and they don't know who are oppressor and what kind of oppressor surrounding us, and they don't Right. know, they don't have a, and how Yeah. they know what is horizontal reservation and what is reservation. They don't know what is education, they don't know Right. what is employment.
They knew only begging, money, sexual, and financially they need. They are oppressing. They are facing so much of oppression. They are every day they are fighting with patriarchy people, casteist people, for transphobic people, homophobic people, Islamophobic people. Every day they are facing all kind of discrimination, and they are like super tired when they return to the home, and they are they got partial sleep, and next Right. day they are going to do their own work. And how do you educate those kind of people? So yeah, so we are educating within our own community why education is more important, why education, employment is more important for us, and why reservation is more important for us. And the people who are supporting us, we are holding their hands with us. Right. Right. And the people who doesn't support, the people who are openly oppose us, we are ready to fight with them. The Right. people who doesn't support our cause, we are educating them to understand our issues. Right. 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 So Yeah. every day we are fighting. Yes, ma'am. Mm. I had a question for Kavita, man, but let's hope she will join again. Now I will turn towards Ankur. I have some question. It is a little bit diverting, I would say, from the topic, but I think it is very important. I want to ask about the cinema for a while. We have seen, especially in Hindi film industries, because cinema is also a part of a media. If we can say that way, cinema also plays influencing society, plays a role in influencing society. So we have seen in recent years that there are films being made on the topic of queer community, on the relating topics of queer community. And we have seen that the neoliberal market oriented directors, and those elite thinking, and which can be sell, which can be merchandise, which can be which can look cool when showed. That kind of subjects are being told, being shown, and that are shown in films. If we can name few films, we will see. Uh, uh, I don't I have written the name, but I don't know the Aishman Khurana's two movies. If I should mention that, I don't know the names. Subhamangal Jada Savdan, I think one, and there is हाँ, हाँ, another one. I don't know. I just forgot. So कोई नहीं, yeah, हाँ. yeah. So, what are your views on these intimacies between the neoliberal, market-oriented directors coming with queer subjects and portraying those in form of cinema, and showing the special, particular type of aesthetics that queer community is being shown. So, in what are your thoughts in that line? Yeah. Thanks for asking this question. But before I go there, I'll just take 1 minute. जो आपने भानुप्रिया जी जो बात कर रही थी कॉन्वर्सेशन के बारे में कि इनका जब हम इश्यूज के बारे में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कॉन्वर्सेशन और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो उसमें बस Right. मैं ऐड करना चाह रहा था कि मैं अपना ही घर का एग्जांपल दूंगा कि जब हम इश्यूज के बारे में नहीं लिखते हैं और स्पेसिफिक समुदाय के इशू के बारे में नहीं लिखते हैं तो कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ती, वहीं की वहीं रहती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी दैनिक जागरण पढ़ते हैं रोज सुबह. उनको नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरी अपने बेटे की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या Right. उसकी लाइफ है, क्या उसके इश्यूज हैं, बिकॉज दोज इश्यूज आर नॉट फीचर्ड इन दैनिक जागरण or whatever TV channel he Yeah. watches. He has no idea.
और अगर कोई इशू आता भी है अखबार में तो वही जून में आ जाता है, सेलिब्रेट हो रहा है, लोग अपना मार्च कर रहे हैं। उनको उतना ही पता है कि ऐसी कोई कम्युनिटी है जो मार्च करती है जून में। इतना ही जानते हैं। तो you will have to write about us, the media will have to write about us and different stories of us, of our life coming out क्या होता है। और पूरे इंसान, मैं 30 साल में कमिंग आउट हुआ, मैं 30 साल में बता पाया किसी लोगों को कि मैं ये हूँ। 30 साल तक मैंने कैसे जिंदगी जी, मेरे पिताजी को ही नहीं पता। You know, this is what people need to know. So many stories, the trauma that we go through. And until they are represented in media, and especially in local media, the conversation will not advance. उनको, मेरे पिताजी को, जब तक यूपी में कोई मंत्री या कोई बड़ा इंसान का फोटो नहीं छपेगा और ये नहीं लिखा जाएगा कि ये है, तब तक उनको समझ में ही नहीं आएगा कि सम्मान भी मिलता है। These people are respective, can have big positions. There's so much that needs to be done in media about the queer community. We have no idea. I just wanted to add that we really need to change the conversation and advance it. And second point about what Grace was saying is that we as media founders or as editors need to learn, as she consistently said, what is an ally. Stay in your lane. That is what it means. You know, we need to stay in our lane. We have been encroaching so much. So we really need to listen and stay in our lane and understand what allyship is. You know, very important point. Yeah, exactly. We are not. We think that we are leaders. Again, the same point. Because we think we know, because of our privileges, we don't. We just need to respect these boundaries. Yeah. Just wanted to add that. Now coming to cinema, I would just say that ये जो भी मूवीज बन रही हैं, एक तो ये सब नेटफ्लिक्स या ज्यादातर तो मैंने वहीं देखी है, कुछ नए सिनेमा में भी आ रहा है। मेरे को लगता है कि अच्छा ही है, मतलब ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन दूं तो कुछ तो जहाँ पे भी मूवी बन रही है, चाहे आयुष्मान खुराना कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, कोई तो एक्टर टेकअप कर रहा है, चाहे उसका मोटिव कुछ भी हो। अगर वो कूल ही बनना चाह रहा है, अगर वो यही मोटिव से कर रहा है कि I want to be seen as a progressive actor or having or dealing with a progressive issue, you know, whatever the motivation is, the movie is getting made, you know, because the movie is getting made, some people are watching it, some people are thinking about it, you know, so it will follow a curve where it will happen for some time. It will become slightly more normal. Then वो मीडिया इंडस्ट्री में बड़े में ऐसा लगने लगेगा बॉलीवुड में कि हाँ इस तरीके की लोग देख रहे हैं पिक्चर, हाँ हम भी बनाते हैं, तब और लोग बनाने लगेंगे। और जब ऐसे डायरेक्टर्स और ऐसे राइटर्स जो कि कम्युनिटी से हैं, अगेन इंटरसेक्शनैलिटी की बात, यू नो, जब एक दलित राइटर or an Adivasi writer would write a queer story, that story would be very different. But for that to happen, again, you need to normalize it, you know, that people watch it, that it is being heard. So, मुझे प्रॉब्लम होती है जब I see a cool representation or a motivated representation or a certain very specific kind of stories, you know, which is very city oriented, urban oriented, you know, क्योंकि that doesn't represent the whole queer perspective and again the intersectionality. It does not represent it. So वो देख के मुझे प्रॉब्लम होती है कि it's not our full lives or whole lives or lives of the whole community, but it is something, you know. So ऐसा बहुत सारा होना पड़ेगा, लोग बहुत सारी गलतियां भी करेंगे, लेकिन होना जरूरी है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। जब ज्यादा होगा तो शायद वो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, नॉर्मलाइज होने लगेगा
जब नॉर्मलाइज होने लगेगा तो और लोग उसके बारे में लिखेंगे, जब और लोग लिखेंगे तो और कम्युनिटी से भी आके लोग लिखेंगे, तब वो कहानियां बदलने लगेंगी। तो उस स्टेज पर पहुंचने के लिए अभी जो भी मोटिवेशन से कर रहा है करे। I would say Right. we just need more stories right now, and then we'll reach a stage where stories will change. And on the industry again, uh, as we were talking about the media, the same responsibility is of the Bollywood industry. Give more space to Adivasi writers. Give Right. more space to Dalit queer writers. Say that I want a writer who is from this community and want them to write the story. Say it. Ask for those stories. Demand those scripts. Then you will see the stories change. If Karan Johar keeps writing the stories, they will look same. And some people will watch those stories and clap for those stories. He needs to invite different writers. So it's the same issue as media. You ask people to come, show that you need them. The industry needs to show. That's all. Yeah. Yeah. Suchitra? Okay, so this was such an amazing discussion, but we need to wind up now. So towards the end, I just want to ask you all. So we talked about intentional representation, right? Editors have to consciously make that decision to accommodate and to actively pursue more people from the community, and and also we need to move beyond the reportage of just incident based reporting and actually look at how policy basis पे और regular basis पे कैसे ये issues हमारी जिंदगी को impact करते हैं. And especially I just want to add one small thing. As a Savarna queer person, as a cis person, the main things that I see very problematically in the journalism and media industry is that I don't think people know when to take a step back. I don't think I should be writing op-eds about how caste is affecting somebody. I cannot write op-eds about how trans lives matter. We need to we need to know when we need to take a step back and when we need to actively pass the mic and not just say that we're going to do it. So yeah, winding up. So how, in conclusion, what do you all think? What should we actively do to encourage more spaces like this and to encourage more representation? Yeah, I quickly go and say that we need more Behan Box, we need more Mook Nayak, we need more Khabar Lahariya, we need more of what Grace Banu is doing. We will need to bring our own tables, bring our own chairs. That will change things because, and then we will have solidarity and build alliance, as Bhanupriya was saying. We are big. We are already big. The alliance is big, and that will show the mainstream media what they were not doing. That's what I think. I mean, we just need this, and we need more of this, and we need to work together. Yes, we need to. Manupriya? I think, I mean, like big thumbs up to what Ankur said. It's, I don't think that's the starting point. That should be the starting point, but that should also be the end goal, really, to kind of, I always thought of bring your own chairs, but this is like Mook Nayaks and Khabar Lahariyas and Queerbait and everyone bringing their own tables is like amazing. Like forget chairs, we need our own tables, and therefore, yeah. But I think as a starting point, please go hire more from these communities. That's something you can do right away. This is and this applies as much to us as to the big legacy media. I mean, we can't be pontificating when we've got a platform ourselves, and we need to be sort of not just saying these things.
or saying these things to the big media. We should be implementing it ourselves. So one of the things we do at Behenbox is when we have, because we don't have a big team, but when we do fellowships, etc., we definitely reserve like 50% for people from Dalit, Bahujan, Adivasi, queer communities. So those fellowships are reserved. So I would say that, just reserve things, reserve places, reserve jobs, reserve positions, reserve writing, reserve columns, for God's sake, reserve columns, make new columns in your newspapers. डिजिटल में तो आपके पास इतना कॉलम है, आपको तो और न्यूज प्रिंट के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है. तो ऑल यू नीड इज इंटेंशन. आपको एक कॉलम क्रिएट करना है. ऑल योर बिग मीडिया हाउसेस हैव लाइक डिजिटल स्पेसेस, तो आप क्यों नहीं कॉलम्स क्रिएट करते, या रिपोर्टाज में क्यों नहीं उनको देते. तो इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज वी आर मेकिंग इट आउट टू बी. नो, इट्स नॉट at all. So yeah. Thank you so much. Grace ma'am? Yes. Yes. So we need, as the you people are saying, we need our own table. We are creating our own table. We made our own table, but here we need the solidarity. So solidarity, it's a most important thing. So when the atrocity, when the violence is happening against us, so we need your solidarity. And we should know, as I said, the ally. What are the allies' roles and responsibility? You should know, and you should follow that. And you should learn what is allyship. And don't be silent. Break your silence. And as I always say, your silence is one of the apartheid for us. So break your silence. When you break your silence, so that is original solidarity for us. Thank you. Thank Jai you so Bhim. much. Jai Bhim. We have created. Suchitra. Huh? Yes, Prashant. Yeah, I also wanted to say that yes, the platforms like Muknayak, the platforms like Behenbox, and the other independent platforms, which are bringing those new kind of, which are bringing those voices, which are inclusive, which are from the community, needs to be also supported, and not just supported like. Just supported, but financially also we should be, as an audience, as a receiver, we should also support them financially, support them in every way, any way what is possible for us, should be shared widely, financially be supported, and promoted. Yeah, that's what I wanted to say. Thank you. Okay, thank you all for coming. Thank you so much for inviting us. Jai Bhim, Jai Savitri, Jai Fatima. Jai Bhim, Jai Savitri. Thank you so much. Thanks.